चलिए ये स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपके कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास में नहीं आ सकते ना, तो उन्हें कहिएगा कि भले रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं ना, लेकिन प्लीज़ मुझे फिर मैसेज कर दें या ईमेल कर दें। आई एम राइटिंग माय ईमेल। आई हैव रिटन माय ईमेल। तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते उन्हें कहिएगा कि मैं रिकॉर्डिंग देख के और मुझे ईमेल कर दें, क्योंकि आपके अटेंडेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो नहीं आ सकता उसको लाइक हम मार्क नहीं कर सकते। टीचर कैन नॉट गिव मी फेवर, क्योंकि आपकी रिटन में आ रही है ना। ओके, वी गो फॉर द दिस फिगर। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल था, आई थिंक ये स्लाइड हमने की थी। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। लाइक व्हाई द इम्प्रूवमेंट्स, व्हाई यू नीड द इम्प्रूवमेंट्स इन योर प्रोजेक्ट और इन योर प्लानिंग ना। Now the reason for the increase in successful projects vary. Number one is the average cost that has been more than cut in half. अब जो एवरेज कॉस्ट है वो अगर मोर आती है ना देन द कट इन हाफ, देन इट इज आल्सो अ रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट। वी शुड improve it. And then better tools have been created to monitor and control progress. The third one will be the better skilled project managers with better management processes are being used. यार इको का कोई ऑप्शन तो नहीं है? प्लीज गिव मी 1 मिनट। Well, I cannot find any option for changing the voice. चले, fine. Okay, let's move to the next slide. अब उसमें है कि what is project management? हमने इसको किया भी था शायद। Let's have a revision for this slide. अच्छा, project management is the application of knowledge. Like you must have knowledge before, you must have skills. आपके पास tools होने चाहिए. You cannot do without the tools. And techniques to project activities in order to meet project requirements. अब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स उसमें कम से कम आपको ये चीज़ें चाहिए। अगर आपको किस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट। और आपके पास स्किल्स होने ज़रूरी हैं, आपको पता हो कि एग्जैक्टली ये काम कैसे होगा ना। एंड देन यू मस्ट हैव अ टूल्स, लाइक यू आर यूजिंग द मशीनरी, so you must have that machines with you. जैसे हम वर्क और जॉब करते हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं या कंप्लीशन है, so we must have that tools. As it is taken from this book, it the references over there. The latecomers, I would request you to please write your roll numbers in the chat. और मैं अटेंडेंस लगाते वक्त फिर भी आपसे ग्रुप में पूछ लूँगा। मे बी कोई मुझसे मिस हो गया हो तो यू कैन लेट मी नो, तो मैं उसको मार्क कर दूंगा। लेकिन जो नहीं आ सकते उन्हें कहिएगा कि रिकॉर्डिंग देख के मुझे अपना रोल नंबर एंड नेम पहले ईमेल कर दें। ये कह दें कि सर आई हैव seen the recording of this lecture, I was unable to join. Like it must not be habitual. ऐसा ना हो कि एवरी क्लास में उसकी ईमेल आ रही हो। अच्छा जी, द फिगर 1.2, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। Now you see where my mouse cursor is, 9 knowledge areas in project integration management.
You must have scope management, time management, cost management, quality management. There must be HR, communication, risk and procurement. ये सारी चीज़ें मिला के ही आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स एंड देन यू गो फॉर द लाइक आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 3 4 एंड सो ऑन. अच्छा लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर. Total attendees are 22 right. नहीं 28 are I think. चलो ठीक है. Please keep on writing your roll numbers in the chat. कि सर ये रोल नंबर बस तो फिर मैं उसको बाद में देख लूँगा. Okay, I'm continuing the slide. अच्छा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स. अब नॉर्मल लाइफ में हम जो यूज़ कर रहे होते हैं ना स्टेक होल्डर, उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि भाई मैं स्टेक होल्डर हूँ और मेरे साथ बिलाल स्टेक होल्डर है आपकी क्लास का स्टूडेंट. तो उसका मतलब ये है कि यार ये दो बंदे इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं. या मैंने कह दिया कि मैं स्टेक होल्डर हूँ मेरे साथ साद है या दीपक है. तो वो स्टेक होल्डर्स का बेसिकली एक टर्म्स ऐसे यूज होता है कि यार ये दो बंदे हैं जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं. अच्छा यहाँ पे देखें कि वो है स्टेक होल्डर्स आर द पीपल्स इन्वॉल्व्ड इन और अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज. यहाँ पे वो अफेक्टिव्स को भी कह रहा है कि दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स इंक्लूड नंबर वन द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड प्रोजेक्ट टीम. अक्सर का ऐसा होता है कि हमें कहीं से स्पॉन्सरशिप मिलती है. अभी आपके कुछ स्टूडेंट जो बाहर गए थे लाइक इन बहरीन आपका एक स्टूडेंट गया था आई थिंक ये बात. तो he got sponsorship from somewhere. So at that time that is sponsorship the SPE is also a stakeholder. प्रोजेक्ट टीम क्या थी उसमें खुद था उसके साथ कुछ टीचर्स थे एंड दैट्स ऑन. अच्छा देन देयर इज सपोर्ट स्टाफ सॉरी. देन देयर आर कस्टमर्स. फिर जो यूजर्स उस प्रोजेक्ट को यूज करेंगे लाइक कोई अगर आईटी का प्रोजेक्ट होता है तो अक्सर का हम उसे यूज कर रहे होते हैं. देन देयर आर सप्लायर्स एंड द लास्ट वन इज द opponents to the project. अक्सर औकात opponents they are very helpful for you to improve your project. लाइक आप नॉर्मल लाइफ में आप देखें ना कोई आपकी गलती ना निकाले तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाते. So it is also counted as a stakeholder. Now, 9 project management knowledge areas. ये one by one हम पढ़ेंगे ना. Like first one is the knowledge areas. Describe the key competencies that project managers must develop. Now, for example, I give you like you are a project manager. तो आप में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. Number one is the four core knowledge areas lead to a specific project objectives. उसमें नंबर वन स्कोप है, नंबर टू इज टाइम, थ्री इज द कॉस्ट, फोर्थ वन इज द क्वालिटी. अब आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अंडर द स्कोप होना चाहिए. लाइक आप ड्रिलिंग कर रहे हैं आपको पता है कि मैं इस डेप्थ तक ड्रिलिंग करनी है तो आप उस डेप्थ तक ही जाएंगे. या अगर आप उससे थोड़ा और डीप जा रहे हैं या थोड़ा कम जा रहे हैं तो यू मस्ट जस्टिफाई कि यार यहाँ पे इतना रिजर्व नहीं था, इकोनॉमिकल नहीं था तो इस वजह से आई एम ट्राइंग टू गो लिटिल बिट मोर डीप. एंड यू मस्ट हैव अ टाइम. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम है कि आपने 4 महीने में ड्रिलिंग करनी है 2 महीने में करनी है तो यू मस्ट गो विद द टाइम.
then obviously the cost. You have a defined cost, आपको under that काम करना है ना. And then the quality. अब ऐसा नहीं है कि आपको ड्रिलिंग इसी एक एंगल में करनी हो, आप किसी और एंगल में जा रहे हैं. So the quality is very important. Next one is for facilitating knowledge areas are the means through which the project objectives are achieved. उसमें नंबर वन है ह्यूमन रिसोर्सेस, नंबर टू है कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज रिस्क, and the fourth one is procurement management. Now, if you discuss them one by one, तो human resources का मतलब है the team which is working with you. अब फॉर एग्जांपल आप एक बंदे तो सारा काम नहीं कर सकते ना. यू हैव अ टीम. अगर आपकी टीम काम सही नहीं करी तो इट विल डिले योर प्रोजेक्ट, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको मतलब कि रिजल्ट सही नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज अ कम्युनिकेशन. अब आपने पहले ही बताना होता है ड्रिलिंग इंजीनियर को, यार कल हम इस डेप्थ पे पहुंच जाएंगे, इस डेप्थ में हार्ड फॉर्मेशन आ रही है, सॉफ्ट फॉर्मेशन आ रही है, ये मड यूज करना है, लाइक वगैरह वगैरह से जो भी एग्जांपल्स है ना, आप यू हैव टू कम्युनिकेट हिम ऑलरेडी. और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कोई किक आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ही कैन कम्युनिकेट विथ यू एंड यू मस्ट बी ए रिप्लाई, लाइक यू एकदम उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे, यार आप इसको ऐसे डील करें, ऐसे डील करें. Then yes, there is a risk. And a risk is in every project. Like in our field, टेलीकॉम की फील्ड उठा लें, आईटी की फील्ड उठा लें, सिविल इंजीनियरिंग उठा लें, मैकेनिकल, whatever, there is a risk. तो risk must be like it must be cop up with the time. We cannot leave the risk. क्योंकि अगर रिस्क को हमने छोड़ दिया तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है and then it come to the disaster. Then yes, obviously there is a procurement in the last. अच्छा, चार इन चार आठ हो गए ना. लास्ट वन इज द नॉलेज एरिया, द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट affects and is affected by all of other knowledge area. ये जो हम सब ऊपर पढ़ के इन सब से ये अफेक्ट होता है और इन सबको इफेक्ट करता है. मतलब मैनेजमेंट सही नहीं होगी तो आपका कोई भी काम सही नहीं होगा. So it is very important and it is related to all of these like the areas which have studied. Okay, moving towards the next slide. As a project management tools and techniques. Project management. एक second, let me just. Okay, fine. The project management tools and techniques assist project managers. ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी असेस करते हैं and their teams in various aspects of the project management. Then some specific ones include number one is a project charter, scope statement, work breakdown structure. Now the first one is project charter. It means he has some duties जो उसको करनी है, ये उसकी लिमिटेशन है, इससे आउट ऑफ लिमिटेशन वो नहीं जा सकता. एक लाइक चार्टर्ड होता है, एवरी जॉब हैज सम डिस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट वन इज स्कोप स्टेटमेंट. उसको अपने स्कोप के अंदर रहना है, उसको अपना टाइम पूरा करना है, अपने टाइम पे अपना प्रोजेक्ट पूरा करवाना है, ये उसका एक स्कोप होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर थिंग्स. द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं जैसे आपने एफआईपी में एक गैंट चार्ट शो किया था, तो आपने एक ब्रेक डाउन कर दिया था कि सर पहले मंथ में वी विल डू लिटरेचर, सेकेंड मंथ में किसी के एक्सपेरिमेंट थे, किसी का सिमुलेशन वर्क था, डिपेंडिंग, एंड देन देयर वाज राइटिंग, फिर प्रेजेंटिंग. आपने एक ब्रेक डाउन शो किया था ना. लाइकवाइज हमारा एक ब्रेक डाउन होता है. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट देयर इज रिटन द फर्स्ट वन इज गैंट चार्ट्स, नेटवर्क डायग्राम्स,
critical path analysis, critical chain scheduling, sorry. इसमें क्या होता है, आपका टाइम आता है, like after 3 months we will be here, we will achieve this one, after 2 months we will achieve this one, after 4 months, after 6 months, 1 year, whatever the time is. So you schedule it, कि after this much time we will be at this point. The fourth one is cost estimates and earned value management. Then there is table in the next slide maybe. So you all have written your roll numbers in the chat. अगर कोई रह गया है तो आई रिपीट, जिस नहीं लिखा है प्लीज इन द चैट राइट योर रोल नंबर एंड प्लीज आस्क ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स के क्लासेस में अपना रोल नंबर लिख लें, अदरवाइज वी कैन नॉट मेंशन यू प्रेजेंट एंड लाइक विल मार्क यू एब्सेंट. आप में से कोई भी अगर रह गया है तो प्लीज राइट इट. Okay, the next slide is how project management relates to the other disciplines. Now, much of the knowledge needed to manage the projects is unique to the discipline of the project management. काफ़ी नॉलेज या काफ़ी हद तक नॉलेज वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ही होती है, लाइक हम उसको किसी और के साथ रिलेट नहीं कर सकते. लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसी मैनेजमेंट होती है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जब किसी और के साथ relate कर सकते हैं, किसी और डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं. And the next point is the project managers must also have knowledge and experience in general management, the application area of the project. Now, journal management means he can manage the things. If you cannot manage it, so obviously you are not a good manager. Always in any management, you will get many hurdles, you will get many problems, you will face many issues. तो द बेस्ट मैनेजर इज जो वहां से भागे ना, जो परेशान ना हो. ही कैन मैनेज इट. उसको पता होना चाहिए कि अभी मैं क्या करूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. हाउ कैन आई डील विद द प्रॉब्लम्स. नॉर्मली ये हो रहा होता है कि इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री व्हेन आई वाज इन द फील्ड, तो आई फाउंड लाइक देयर आर सम पीपल्स हु लिव नियर बाय द वेल साइट. तो उनके एक अजीब इश्यूज होते हैं. लाइक देयर वाज वन पाइपलाइन दैट वाज पासिंग बाय, एक ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी फ्रॉम वेल टूवर्ड्स द प्लांट, जो एलपीजी प्लांट बना हुआ होता है, जैसे आपने कोई प्लांट विजिट भी किया होगा. तो रास्ते में जहाँ से पाइपलाइन मूव हो रही थी वहाँ किसी ने इशू कर दिया कि यार हम यहाँ से पाइपलाइन मूव नहीं होने देंगे. हालांकि गवर्नमेंट उनके पास एग्रीमेंट की हुई थी और सब कुछ किया हुआ था. सो व्हेन वी वेंट देयर कि यार क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि सर हमें अपने पैसे नहीं मिले. अब देखें, उस टाइम आप अपनी जेब से निकाल उनको पैसे नहीं दे सकते. अब उधर आपको ऐसे चीज़ें मैनेज करनी है कि आपका काम भी ना रुके और वो बंदे भी लाइक सॉफ्टली दे कैन लीव द रोड एंड दे कैन से ओके फाइन. सो यू कैन लाइक डिस्कस विद देम कि यार आपका प्रॉब्लम है, चल रहा है और आपको पैसे मिल जाएंगे. आई विल टॉक विद द हायर अथॉरिटीज, ऐसे करके आपको बातें सेट करनी होती हैं. नाउ द थिंग इज दैट यू नेवर नो कि कल सुबह उठ के क्या प्रॉब्लम होगा. सो द गुड मैनेजर इज हाउ ही मैनेज द प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट. वही एग्जांपल जो मैंने देखा, आपको एक एप्लीकेशन करनी है, आपने एक पाइपलाइन मूव करनी है वहाँ से, तो आपकी वो एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपका वो काम चलते रहना चाहिए टाइमली.
अगर टाइमली नहीं चला तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका टाइम बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, आप देखें नॉर्मली हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी क्या हिस्ट्री है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल कोट किए गए। The first one is, some people argue that building the Egyptian pyramids was a project, as the wall of China was built. Now we don't know. It is all myth. एक myths बनाई हुई है कि भाई pyramids कैसे बनी थी। आपने इनको देखा भी होगा नेट जियो पर, या किसी किसी बुक्स में पढ़ा होगा कि कुछ कहते हैं कि पिरामिड्स ऐसे बनाए गए थे, किसी का क्या मानना है, किसी का क्या मानना है, बट वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज। द नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, मोस्ट पीपल कंसीडर द मैनहट्टन प्रोजेक्ट टू बी फर्स्ट प्रोजेक्ट टू यूज द मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये एक हिस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है, द पीपल्स हु वर्क इन दीज थिंग्स। उनमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी ने कहा कि यार ये मॉडर्न प्रोजेक्ट, मॉडर्न मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। किसी ने कहा कि नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी। किसी ने पिरामिड्स को कहा, किसी ने पिरामिड्स की कोई तारीफ की है, किसी ने उसमें कुछ क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है। तो दीज आर द ऑल हिस्ट्री, बट वी मस्ट लर्न कि ये प्रोजेक्ट, चले आप उसको से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, लेकिन देखें एक ऐसी चीज बनाना जो उस टाइम इम्पॉसिबल थी। उनके पास टूल्स नहीं थे, इतने थोड़े बहुत तो होंगे, उनके पास मशीन्स तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो आजकल के दौर में हम कहेंगे यार ये तो मशीन ही बना सकते हैं। लाइक आपको, वी टेक आवर टीम, हम 10-15 लोग एक साथ खड़े होकर कहेंगे यार बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, सब कहेंगे सर इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, वी कैन यूज द मशीन्स। हाँ सर, फिर हो जाएगा। लेकिन देखिए उस टाइम पे उन्होंने कैसे किया, दैट्स आल्सो मैनेजमेंट। वेल, द लास्ट पॉइंट इज, this 3-year, $2 billion in 1946 dollars project had a separate project manager and a technical manager. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि in the 1946 using $2 billion, कोई भी एक इनमें से आप प्रोजेक्ट उठा लें, लाइक मैनहट्टन प्रोजेक्ट या उठा लें, he is a separate manager and the technical manager, so it can vary। मैनेजर एक हो सकता है, दो या चार, it can vary, but the thing is that how these projects were executed, how these projects were completed within the time, using no machines and the tools of that time. Now next is the sample of the Gantt chart। इस सैंपल से अच्छे तो आपके अपने FIP के सैंपल्स हैं। चलें, if we just see इसमें क्या करते हैं हम, like we take on the left side there's a column, we write the task। अब जैसे आपने उसमें लिखा था कि यार लिटरेचर रिव्यू है, किसी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, किसी की राइटिंग था, देन रिपीटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स था, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपने लिखी थी। एंड देन एज यू मूव टू द राइट साइड इन द कॉलम्स, आपने उनको मार्क किया था कि फर्स्ट मंथ में हम ये करेंगे, सेकंड मंथ में हम ये करेंगे। या आप लोगों ने ऐसा एक गैंट चार्ट बनाया था, तो ये उसी की एक एग्जांपल है। उसमें आप बेसिकली ये बता रहे होते हो कि कितना टाइम कितनी टास्क को दे रहे हो। लाइक लिटरेचर रिव्यू है तो उसको कितना टाइम है, अब किसी की सिमुलेशन है तो वो सिमुलेशन का कौन सा स्टेप कितना टाइम लेता है, किसी एक्सपेरिमेंट्स हैं तो कौन सा एक्सपेरिमेंट्स कितना टाइम लेते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपके पास टाइम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे करते रहे करते रहे करते और एट द एंड सारे गलत निकले और आपने कहा कि सर फिनिश। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। You can see like the results are right
Okay, go on. If results are wrong, there are some error. Yeah, like error is too much, then you can repeat those experiments. Then you go for the writing of your thesis, your presentations, like your mid presentations, final presentations, and then at last you finish it. This is also the same related to that Gantt chart. अच्छा, next is a sample network diagram. अब ये देखिए, इसमें एक A है, B, C, then there is D, E, F, G, H, I, J. ए में क्या हो रहा है, उसकी स्टार्ट लिखा हुआ है, उसका फिनिश लिखा हुआ है, उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है. ए इज रिलेटेड टू द डी. ये नेटवर्किंग शो कर रहा है कि कौन सी टास्क किस टास्क से रिलेटेड है. एंड देन डी की स्टार्ट डेट लिखी हुई है, फिनिश डेट, ड्यूरेशन इज 4 days. Then D is related to the H. Now come towards the B. B की स्टार्ट डेट है, फिनिश डेट है, ड्यूरेशन है. D is sorry, B is related to E and F. Then again there is a start date for the E, the finish date for the E, the duration is 5 days. F, there is a start date, there is finish date, the duration is 4 days. E is related to the H, and F is related directly to the J, the last one. Now come towards the C. There is written the start date for the C, the finish date, the duration. It is related to the G, and G is related to the I, and I is related to the J, whereas J is the last. तो दिस इज ऑल द सैंपल ऑफ द नेटवर्क डायग्राम. जब आप टास्क बनाते हैं तो आप ये बताते हैं कि ये टास्क किससे रिलेटेड है. इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं. आप सबने एक चीज़ पढ़ी हुई है, लाइक आपने जब रिजर्वायर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो उससे पहले आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रिजर्वायर फ्लूइड पढ़ी थी. अगर आप अपनी वो जो सैंपल, हाउ टू से, द कोर्स आउटलाइन आप पढ़ लें ना, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ होता है प्री रिक्विजिट. तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इस सब्जेक्ट से पहले प्री रिक्विजिट आपका फला सब्जेक्ट है, वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है. वो आपको ज़रूर पढ़ा होना चाहिए. दैट्स ऑल नेटवर्किंग. यू कम टू द रिजर्वायर सिमुलेशन. रिजर्वायर सिमुलेशन से पहले उसका प्रीरिक्विजिट क्या आ रहा होता है, रिजर्वायर इंजीनियरिंग आ रहा होता है. ये जो हमारा सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके प्रीरिक्विजिट में आपके लाइक प्रोफेशनल राइटिंग, एथिक्स एंड दिस ऑल थिंग्स आर ओवर देयर. अच्छा, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है इन डिटेल. ईच बॉक्स इज अ प्रोजेक्ट टास्क फ्रॉम द WBS. एरो शोज द डिपेंडेंसी, में क्या डिपेंडेंसी है, में क्या कनेक्शन है. The bolded tasks are on the critical path, and then if any task on the critical path take longer than planned, the whole project will slip unless something is done. अब देखिए, इसमें एक बात वो बड़ी अच्छी कह रहा है कि देखिए सारे आपस में रिलेटेड है, आखिर में सारे जे पे जा रहे हैं. अब कोई भी एक टास्क अगर डिले हुआ ना, तो आपका लास्ट एग्जीक्यूशन जो है ना जे की, वो डिले हो जाएगी, क्योंकि जे के पास कुछ डेटा एच से आ रही है, कुछ डेटा ई एफ से आ रही है, एंड सम डेटा इज कमिंग फ्रॉम द आई. अब इनमें से कोई भी एक डिले हो गया तो ऑब्वियसली आपकी फाइनल एग्जीक्यूशन डिले हो जाएगी. सो इट इज ऑल interrelated with each other. And then network diagram were first used in 1958 on the Navy Polaris project, before project management software was available. इसके जब तक कोई सॉफ्टवेयर बन जाएं, उससे पहले इसको मैनुअली ऐसे यूज किया गया था फर्स्ट टाइम इन द नेवी इन 1958. ये पॉइंट्स याद कर लें, आपके क्लास टेस्ट में से पॉइंट्स आ जाते हैं, एंड देन यू बिकम्स लाइक सर ये कहाँ से आ गया.
अच्छा, before going to the next slide, let me see your attendance for all of you. Have you all marked your roll number in the chat? अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ राइट योर रोल नंबर इन द चैट। लाइक जैसे लास्ट लिखा हुआ है कि वहीद अली 19 FPG 61, ऐसा आप लिख लें। मैं एक वर्ड की फाइल बना लेता हूँ, वो आपके साथ अभी शेयर भी कर लेता हूँ। प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। अच्छा, लेट मी शेयर दैट MS वर्ड फाइल। आप देख लें उसमें अपने रोल नंबर्स। किसी का मिस है तो प्लीज़ मुझे बता दें। आई एम स्टिल राइटिंग। कुछ लिख ली है, कुछ मैं लिख रहा हूँ, तो कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा, तो आप उसको देख भी लें। या में से कोई भी एनी वन ऑफ यू कैन सी के सर वो फला रह गया है। लेट मी जस्ट कंप्लीट इट फर्स्ट, गिव मी 2 मिनट्स। जी स्टूडेंट्स, देख लें इसमें से किसी का रोल नंबर मिस है तो प्लीज़ मुझे बता दें। लाइक आई हैव 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 जी टोटल आई हैव 33। ठीक है, कोई रह गया तो प्लीज राइट योर रोल नंबर ताकि उसका मिस ना हो जाए। लेट मी सेव योर दिस फाइल। सर 01 भी प्रेजेंट है क्लास में। 01 ठीक है। 61 सर। 01 और कौन सा? 61 सर। 61 हाँ है। 61 सर है। 37। एक सेकंड 37 में देखने दें। एक सेकंड 37 प्लीज आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी 37 लिख लिया मैंने। एनीवन एल्स प्लीज मुझे बता दें। 39 सर। 39 सर। ठीक है 39 हो गया। 55 सर। 39 के बाद कौन सा? सॉरी 55 ठीक है। सर 45। ठीक है यू कैन राइट इट ऑन चैट आल्सो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप खुद बैठे हो दोस्तों का नंबर लिख रहे हो। ठीक है 45 हो गया। कोई और प्लीज? इट्स ऑल डन। किसी का रह गया तो देख लें। अच्छा चलिए मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अच्छा मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है? नो सर। चलें ठीक है दैट्स फाइन। ठीक है ये वर्ड की फाइल के सब में रोल नंबर हैं, किसी का मिस तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज़ बता दें, हो सकता है मैं लिखने में भूल गया हूँ और आई डिड सम मिस्टेक। ठीक है जी so we are going towards the slide. Let me just do one more slide and then we can have a we can leave the class. Stop sharing. Okay ji, the last slide we can discuss about it. Then you can have a rest. अच्छा कल हमारी क्लास होगी सुबह 8:30 बजे, तो आई होप यू ऑल विल बी देयर। कोशिश कीजिएगा टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज अटेंडेंस का प्रॉब्लम यू ऑल नो दैट। सो द सैम्पल इंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल अभी एक सैम्पल है, ऐसा नहीं होता सब में ना, किसी में चेंज होता है, किसी में कैसे किसी में कैसे। Now company ABC project portfolio, it can be any project that is taken as ABC, like as an example. Project name, project 1, project 2, 3, 4, फिर उसमें कुछ approved project हैं 10, 11, 12, 13, 14. Then there are some opportunities, project 100, project 200. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि white is equals to going well. अगर आपने सर्कल आपका white है, इट इज लाइक प्रोजेक्ट सही चल रहा है, इसमें कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ग्रे अगर होगा तो उसमें सम प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन ब्लैक वन इज द मेजर प्रॉब्लम्स। अब इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन राइट द टिक मार्क, द क्रॉस, ABC, कोई भी आप ऐसा मार्क दे सकते हैं, लेकिन वही मार्क आपने फिर यहाँ पर डिफाइन करना है कि लाइक अगर वो टिक है तो इट इज़ गोइंग वेल, सिंगल क्रॉस है तो सम प्रॉब्लम, डबल क्रॉस कर दें इट इज हैविंग मेजर प्रॉब्लम्स, या इसकी तरह आपने ब्लैक कर दिया, ग्रे कर दिया और वाइट कर दिया, तो उसमें ये होता है कि भाई स्कोप में कोई प्रॉब्लम है ना। अच्छा इसके प्रोजेक्ट 2 का जो स्कोप है ना उसमें मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
प्रोजेक्ट 1 का जो स्कोप है इट इज़ गोइंग वेल, प्रोजेक्ट 3 का भी स्कोप सही है, प्रोजेक्ट 4 का मतलब ये अपने स्कोप पे काम कर रहे हैं, these are not going beyond the scope. Okay, and then for example the schedule, उनका टाइम का शेड्यूल था, प्रोजेक्ट 1 में सम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप उसको वर्कआउट करेंगे, आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रोजेक्ट 2 में देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम, मतलब आपको उसमें एनी हाउ देखना ही देखना है, यू शुड वर्क ऑन दैट वन। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ कॉल प्लीज।
जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट. चलें, it's almost time is there, so let's finish our today's class. Inshallah, see you tomorrow at 8:30. Please be present. और आज की अटेंडेंस में मार्क करके ना फिर भी देख लूँगा, अगर कोई एब्सेंटीज हुए तो मैं आपको ग्रुप में पूछ लूँगा. प्लीज़ एनी वन ऑफ यू मुझे रिप्लाई कर दे कि सर नहीं वो फला था, मे बी देयर इज मिस्टेक, मैं उसको नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है. So it's all from today. Thank you very much. Inshallah, see you tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.